Welcome to the class. Today we are going to look at some specific features of English words. We are calling them specific features because they need special attention from learners. These are features of sounds which become important when we speak words, and finally to be able to speak with confidence and to be able to sound impressive, these things make a huge lot of difference. They are very important for the purpose of learning. They are very important to pay attention to. They look trivial, but they contribute a lot. So let's look at what those things are and how we incorporate them in our learning so that we can pay close attention to those things. So let me take you to this discussion one by one. So let's look at some of these very simple looking English words. Remember, one more time, we are talking about speaking English. Therefore, we are paying attention to speech sounds in particular, and not specifically to spellings, that is how words are written. They are important. We have to write a lot of things, we have to learn spellings, but when we pay attention to how we sound and how we speak these things, and we look at some of the underlying factors, they become very obvious for us to pay attention to, and therefore the language becomes impressive. So let's look at some of these very simple looking sounds, simple looking words. So these words are pen, pin, pan, car, can, king. So what are these? These are monosyllabic words. Remember the syllabification that we have discussed one of these days? These words have just one syllable. So that means these words definitely have vowel sounds in them. And then we have looked at the descriptions and classification of consonants and vowels. Let's use that classification for understanding words in a greater details. So if we look at the word pen, so what are the sounds involved in this monosyllabic word pen? We have pa, a and na sound. Three sounds: pa, consonant, a, vowel, and na, consonant. All these words are mostly CVC. All of them are CVC, except the last one. The last sound in king is a velar nasal, which it's actually CVC, but maybe this is it can be taken as a cluster also. But there are three sounds: consonant, vowel, consonant in all these words. Let's look at the consonant sounds then. Each word has, so for example, this first set of three sounds. What is the first set of three words? What's the first consonant sound in these words? If you pay attention to this, you will see the sound is pa. Pa. Why I want your special attention to this is there are two reasons. A, again it will make ourselves impressive, that is the final goal, but we also need to know why we talked about consonant and vowel distinction. How do we put that information, that kind of knowledge in helping us
improve our English speaking, make our English speaking impressive. So look at this. So what kind of a consonant is this? This is a bilabial consonant, pa. The bilabial consonant means the place of articulation for this sound is lips, both the lips. They come in contact with each other and we produce this sound. When we look at it further, they are bilabial sounds. That is, according to place of articulation, the place of articulation is lips. But if we look at the manner of articulation, this is called, so, bilabial, and according to manner of sound, this is called stop. Stop means the flow of air moves through our oral cavity, and before the release, it is completely blocked, completely stopped. If you try speaking, it's not stopped for a long time, but before the release, it gets stopped. So it is before we release, when both the lips are in contact, it has blocked the flow completely. Therefore, it is called a stop sound. So it is bilabial stop. This is also called plosive. There are different names for these things, but they mean the same thing. Bilabial plosive. That is because it is produced soon after that release. And when we look at further, we see that these are non-aspirated sound. That is, there is no additional flow of air with this, and there is no additional aspiration compared to pa. So when we say pa, it's not aspirated. When we say pa, it is aspirated. And it is also not voiced, because the voiced sounds are the sounds for which we have additional vibration in vocal cords. So a sound like b is also unaspirated like pa, but it is this one is voiced and this one is not voiced. So a sound like pa is not aspirated, not voiced. So how do we give it a classification? Minus aspiration, minus voice. So we call unaspirated, voiceless, bilabial stop. That's the description of a consonant sound like this, like pa. Similarly, look at this set of these three words. What are they? Car, can, king. Now, initial sound in each one of these three words is ka. So if you look at this sound, and this is why we looked at again the classification of consonant sounds. We needed to look at their places of articulation and then their manners of articulation. You don't have to, one more time I would underline, you don't have to remember these things to learn English. But if you pay attention to these things, learning becomes easier and your English becomes impressive. Isn't that the goal? Isn't that something worth paying attention to? So we are not drawing your attention, we are not asking you to remember these terms, but if you understand them using those terms, then they are going to be helpful. So look at this one more time. So this is ka. The place of articulation for ka is velum. Therefore, this is a velar sound. And again, if you look at it, it's not aspirated like
it is an aspirated sound. It's not like kha. Ka is unaspirated, kha is aspirated. It is not voiced. So this is again unaspirated, voiceless, velar stop. And the third one that we look at, we have more words we are going to show you, but the third one in this series is ta. This is again unaspirated, voiceless, alveolar stop in English. So these three voiceless, unaspirated, alveolar, velar, alveolar and bilabial stops are very important sounds for various purposes. And one of the, having described these three vowels once again in the context of places of articulations and manners of articulations, I am going to draw your attention to this specific, one very specific feature of English. ये इतनी बात आपके समझ में आई होगी अब तक कि हम इंग्लिश साउंड्स की बात कर रहे हैं. आप ध्यान रखिए कि प, क और ट हिंदी में भी है और हमारे और लैंग्वेजेस में भी है. लेकिन अभी हम खासकर आपसे इन साउंड्स का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये इंग्लिश में भी प बाइलेबियल स्टॉप है, क वेलर स्टॉप है, लेकिन त डेंटल नहीं है इंग्लिश में, इट इज एल्वियोलर. ये टीथ के थोड़ा सा ऊपर इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, इसी वजह से ये सॉफ्ट होता है. और ये रेट्रोफ्लेक्स भी नहीं है जहां पर टंग वापस मुड़ करके जाता है जब हम हिंदी में ट, ठ इस तरह के साउंड्स बोलते हैं. तो इसलिए सीखते समय में हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि हिंदी में जैसे ट है, ये रेट्रोफ्लेक्स ट अंग्रेजी में नहीं है, ये एल्वियोलर ट है, ट ट, और ये स्टॉप साउंड है. तो इन तीन साउंड्स के बारे में खास करके जानना अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है. ये स्टॉप साउंड्स हैं, तो हमने डिटेल में आपको बताया कि ये कैसे स्टॉप है, कैसे ये वॉइसलेस है, कैसे ये एस्पिरेटेड नहीं है. तो अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस मतलब एक्स्ट्रा एस्पिरेशन नहीं है, वॉइसलेस का मतलब है वोकल कॉर्ड में एडिशनल वाइब्रेशन नहीं है. आप अपने हाथ को अगर यहां रखकर ये साउंड बोलेंगे, जैसे ब साउंड है, ब वॉइस्ड साउंड है, ग साउंड है, ये भी वॉइस साउंड है, और ब वॉइस साउंड है, ग वॉइस साउंड है. तो जब आप इसको हाथ को यहां रखकर ये दोनों साउंड बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा एडिशनल वाइब्रेशन अपने हाथ पर भी महसूस होगा. You will feel little additional vibration. However, when you look at it through machines, they become clearer. But our discussion is, the sounds in particular for our discussion are pa, ta, ka, and they are not voice sounds. So let's look at their importance now. So one of the very specific thing in English that we need to know which happens is, in all these words, the first sound, whenever they are unaspirated, voiceless, stop, they are going to get aspirated. इसीलिए एक बार और सुनिए इसको. At the initial position in a word, unaspirated, voiceless, stop sounds like pa, ta, ka are going to get aspirated. अभी सिर्फ इतना याद रखिए, voiceless,
unaspirated stops like pa, ta, ka get aspirated in the initial position of a word. तो इन वर्ड्स को ध्यान में रखिए, और जब आप इंग्लिश स्पीकर्स को ये शब्द बोलते हुए सुनेंगे तो ये हम इसको पेन कहते हैं, हम इसको पिन कहते हैं, हम इसको पैन कहते हैं, लेकिन जब इंग्लिश स्पीकर्स को आप बोलते सुनेंगे तो वो बिना किसी एक्स्ट्रा कोशिश के उनके मुंह से निकलता है पेन, पिन, पैन। तो ये नेचुरल प्रोसेस है पा का इनिशियल पोजीशन पर एस्पिरेटेड होना। उसी तरह से क का इनिशियल पोजीशन पर एस्पिरेटेड होना बहुत नेचुरल सी बात है। जैसे कार, कैन, किंग। एक और बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्पीकर्स जो दूसरी और भाषाएं बोलते हैं और जिन्होंने अंग्रेजी बाद में सीखी है, जो अंग्रेजी सीख रहे होते हैं, उनके लिए ऐसा करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि उनके लिए ये इंट्यूटिव नहीं है। तो अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसे बोलें जैसा हम बोल सकते हैं, जैसा बोलते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये जानने से जब हम दूसरों को सुनते हैं तो आसानी होती है, सुनने में आसानी होती है। तो चांसेस आर, ऐसी संभावना है कि इन चीज़ों को जानने के बाद हम बेटर लिसनर बन सकते हैं और बेटर स्पीकर भी बन सकते हैं, और हमको इन चीज़ के बारे में जानकारी भी होगी, तो हम समय समय पर ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो दैट in all possible ways it has potential to make you a better speaker, a better listener, and therefore this kind of information for us to keep in mind. So ये सारे words pen, pin, pan, car, can, king, ये पहला साउंड का पहले 3 वर्ड्स में प और दूसरे 3 वर्ड्स में ख थोड़ा सा एस्पिरेटेड होता है। तो कैसे होता है एस्पिरेटेड? ये देखिए, ये है प साउंड, तो ये प है और ये एस्पिरेटेड होकर के थोड़ा सा ये प हो जाता है। तो साउंड वही है प, लेकिन जब ये इनिशियल पोजीशन पर, सेम साउंड जब इनिशियल पोजीशन पर आता है तो ऐसा साउंड होता है। अब आप इसको वर्ड दूसरे वर्ड्स में देखिए, ये सारे वर्ड्स पढ़ के देखिए, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, आपने कई बार सुने होंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो हमने अभी देखे हैं। ये मैथमेटिकल सिंबल है फाई, और वो खाने वाली भी चीज़ होती है फाई, जैसे एप्पल पाई होता है या फ्रूट पाइज होते हैं। फैन, फिन, पॉट, टॉप, कॉट, कैट, टीन, काइट, ये सारे वर्ड्स हैं जिसमें कुछ वर्ड्स में, जैसे ये सारे वर्ड्स में प है, कोट और कैट में, सो इसमें प है, इसमें क है, इसमें ट है, और फिर से इसमें क है, इनिशियल साउंड क है। तो आप ये इनिशियल साउंड्स है, ये मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं। इस पर ध्यान रखिए जब मैं मोनोसिलेबिक वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ी देर में इसका इम्प्रूव्ड वर्जन बताता हूं। तो अभी क्या बताया था मैंने? व्हाट डिड आई टेल यू? मोनोसिलेबिक वर्ड्स, दैट इज in a word at an initial position, voiceless, unaspirated stops like pa, ta, ka becomes aspirated. So ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे जब हम इसको साउंड करेंगे, तो ये हो जाएगा फाई, ऐसे लगेगा। ये है फैन। अब ये भी ध्यान में रखिए, अभी मैं बताता हूं
ये हो जाएगा फिन, ये हो जाएगा फॉट। ठीक है, ये ध्यान, इसी तरह से ये सारे वर्ड्स होंगे। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब ये साउंड्स इनिशियल पोजीशन पर नहीं होते, मतलब ये बीच में हो या एंड में हो, तो ये एस्पिरेटेड नहीं होंगे, ये फिर नॉन एस्पिरेटेड ही रहेंगे। जैसे ये देखिए स्पाई, हमने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आपके लिए ढूंढ कर निकाला है आपको दिखाने के लिए, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ उतनी ही है कि जब ये अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस स्टॉप इनिशियल पोजीशन पर एस्पिरेटेड होता है और बाकी पोजीशंस पर नहीं होते। तो जब ये यहां पर इस वर्ड में देखिए, यहां फाई है, यहां पर स्पाई है, तो यहां पर बिगिनिंग में स साउंड है, प साउंड नहीं है। दूसरे वाले में इस सारे वर्ड्स में यहां तक आप देखिए, ये स्पैन है, ये स्पिन है, ये स्पॉट है, ये स्टॉप है, ये स्कॉट है। इन सारे वर्ड्स में प, ट और क ये एस्पिरेटेड नहीं है, जब ये, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन पर नहीं है। तो इसको हम स्पाई, स्पैन, स्पिन, स्पॉट, स्टॉप, स्कॉट पढ़ेंगे। यहां पर ये हो जाता है फाई, फैन, फिन, फॉट, टॉप, कॉट, कैट। और ये एस्पिरेशन बहुत ही मामूली सा होता है, लेकिन बहुत विजिबल होता है, बहुत डिस्टिंक्ट होता है, सुनाई भी पड़ता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, और इसको ध्यान में रख करके अगर हम प्रैक्टिस करें तो इससे हमको हमारा लैंग्वेज ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये इनिशियल पोजीशन पर नहीं हो तो ये एस्पिरेटेड नहीं होता है, तो अब हम इसमें गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आपको साउंड से रिलेटेड दो और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। तो समरी इसका ये है कि ये तीन साउंड्स प, त, क, ये वॉइसलेस और अनएस्पिरेटेड। आप प्रैक्टिस के लिए इन वर्ड्स को भी चुन सकते हैं कि आप देखिए, हमने सिलेबिफिकेशन की बात की थी। अनएस्पिरेटेड वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं, वॉइसलेस में कितने सिलेबल्स हैं, ये स्टॉप में कितने सिलेबल है, साउंड्स में कितने सिलेबल है, ढूंढ कर देखिए, ये आपको मजा आएगा इस तरह की प्रैक्टिस करने में। तो यही मैं बता रहा था कि इनिशियल पोजीशन पर ये हो जाएगा, और अगर इनिशियल पोजीशन पर नहीं है तो यही रहेगा। इनिशियल पोजीशन पर एस्पिरेटेड हो जाएगा, नॉन इनिशियल पोजीशन पर अनएस्पिरेटेड ही रहेंगे ये साउंड। तो इसका रूल ये है इस तरह की चीजों का कि इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन कंप्लीट करने के लिए मैं बताता हूं कि वॉइसलेस स्टॉप्स are aspirated at the beginning of a word only when they are at the beginning of stressed syllable. इसलिए हमने आपको स्ट्रेस की भी बात बताई थी पहले। तो अभी हमने इस चीज से ध्यान थोड़ा सा हटा दिया था क्योंकि याद रखने में आसानी हो, लेकिन एज ए रूल दिस मस्ट बी स्ट्रेस्ड, सिलेबल मस्ट बी स्ट्रेस्ड। अच्छा, ये एस्पिरेशन इनिशियल सिलेबल इनिशियल पोजीशन पर होता है। तो अभी all the examples that I have given you today, they are all monosyllabic words. Therefore, they are at the initial position of the word also. But such aspiration can also take place at syllable initial position. At a later stage, when you have gone through this,
I'm going to show you two-syllable words where these sounds get aspirated at the beginning of another syllable. But for the time being, you can just practice with monosyllabic words. So please take a look at more words. Pick 10 words each with these three sounds, pa, ta, ka, in the beginning of the word, and see if they are aspirated or not. So, but when these sounds a voiceless stop remains unaspirated, they don't become aspirated if it follows a स साउंड. अभी जितने भी आपने देखा स्पाई में प साउंड स के बाद आता है, इसलिए वो एस्पिरेटेड नहीं होता है और ये अनएस्पिरेटेड रहता है. और जितने भी वॉइस साउंड है जैसे ग, ब, ये सारे हमेशा ही अनएस्पिरेटेड रहते हैं, वो कभी भी एस्पिरेटेड नहीं होते इस कंडीशन में. तो हमको सिर्फ प, त, क और उसके वॉइस्ड उसके एस्पिरेटेड काउंटर पार्ट को ध्यान में रखने की जरूरत है. और इससे हम एक स्पेशल फीचर को हम ध्यान में रख करके अपने लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं. एज ए नोट ऑन दिस थिंग, I wanted your attention to a specific thing. Look at this word fan. जब इसको हम ये चूंकि सिलेबल इनिशियल पोजीशन पर है, तो जब ये हम बोलते हैं तो ये हो जाता है फैन. फैन. लेकिन इंग्लिश में एक और वर्ड है जो है फैन. फैन. फैन जिसको हम हिंदी में पंखा कहते हैं और तरह के होते हैं. अब इस दोनों वर्ड में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये फैन में बाइलेबियल साउंड एस्पिरेटेड हो रहा है और इसमें जो फा है, तो सो बेसिकली यहां देखिए, ये फा और ये फा दोनों में बहुत अंतर है. ये बाइलेबियल एस्पिरेशन है और ये लेबियोडेंटल साउंड है. तो फादर, फैन, फ्रिकेटिव, फ्रीक्वेंट और जितने भी साउंड्स होते हैं वहां पर, जितने भी वर्ड्स हैं वहां पर ये वाले साउंड है. तो ये हमारे लिए ध्यान देने की जरूरत है. तो ये फा है. इसी तरह से इंग्लिश में ये साउंड स और ज के बीच का डिस्टिंक्शन भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. ये दोनों ही साउंड फ्रिकेटिव साउंड्स हैं. दोनों ही फ्रिकेटिव साउंड्स. इसको फ्रिकेटिव साउंड्स बोलते हैं. लेकिन इस दोनों में अंतर यह है कि ज माइनस वॉइस है स, और ये वाला साउंड प्लस वॉइस है. मतलब स वॉइसलेस है, इसमें वोकल कॉर्ड में कोई वाइब्रेशन नहीं होता, और ज में वाइब्रेशन होता है. तो इस दोनों फ्रिकेटिव के बीच में सिर्फ इतना अंतर है कि एक वॉइसलेस है, दूसरा वॉइस्ड है. एक में वॉइसिंग नहीं है, मतलब वाइब्रेशन नहीं है. स में वाइब्रेशन नहीं है और ज में वाइब्रेशन है. आप प्लूरल फॉर्मेशन रूल की तरफ जाकर देखिए. एक दिन हमने प्लूरल फॉर्मेशन रूल्स की चर्चा की थी. We discussed plural formation in English, and then we looked at examples and through which we saw that most commonly used plural markers in English is a z sound. And in the beginning of, if the word ends with pa, ta, ka, then they become, the plural marker is sa.
And I requested you to find out how pa, ta, ka are similar to each other. Now, with this discussion today, you can go back and look when we discussed that pa, ta, ka in words ending in sounds pa, ta, ka, the plural marker is sa. So I requested you to look at common thing between pa, ta and ka. Today you can see what is common between pa, ta, ka. They have different places of articulation. One is bilabial, the other is alveolar, and third one is velar. But what is similar is they are all unaspirated voiceless stop sounds. So, and therefore, in close proximity of an unaspirated voiceless sound, a voiced za becomes sa. So, remember, everywhere else this plural marker is za. So, in the proximity of a voiceless minus voice sound, this voicing does not remain the same. So, this also becomes minus voice and then they sound sa. Therefore, if in a words like books, this word ka, book ends with a ka sound, which is a voiceless stop. So, the plural marker sounds as sa and we say books. In a word like cap, the last sound is pa, which is an again unaspirated voiceless bilabial stop sound. So, the plural marker sounds as sa. So, ये सारी बातें जब आप ध्यान में रखेंगे तो जैसे प, त, क का फीचर क्या है, प, त, क का इन तीन साउंड्स के में कॉमन क्या है, इनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, तो ये जानने से दो चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आने लगती है. We start understanding plural marking with clarity and we also improve our pronunciation of these sounds at the word initial or syllable initial position in a word. So, these two things are very important and these two things are going to again improve our English and make us more confident. Thank you.